Dear students, let's start with future perfect tense. Hello dear student, welcome back. I'm back with new topic, and today's topic is that you can see here future perfect tense. What is future perfect tense? Actually, this is a kind of sentence in which we convey the action and the timing. किस तरह की timing? You know that it gives us the sense of completion of the action in a certain point of time in the future. हिंदी की जिस वाक्यों के अंत में राइट चुका होगा, चुकी होगी और चुके हो गए आता हो, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. राइट? व्हाट इज future perfect tense? So this is a tense in which we start our action in the future. Actually future में वो शुरू करना है. That is just the planning of doing something, and at the same time we can say and we planned and we actually sense that the action that will be complete till then, भी तब तक वो खत्म हो चुका होगा. Right? What will be the subject? How we can identify that? Subject तो बहुत सारे होते हैं. You know, ये helping verb कौन सा होगा? Oh yes, so we have two type of helping verb that we have already done in the previous the topic, right? These are the will and shall, but here you will add some more, right? Helping verb बता दिए अभी, पूरा नहीं बताया. Then verb कौन सी इसमें यूज होने वाली है? Yes, third form में यूज हो जाएगी. बाकी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्लॉज है, कोई आपने जोड़ना है तो, right? Next one is here. What are the subjects? Noun, pronoun. Noun can be singular, noun can be plural. And as far as concerned both the pronoun, and these are many, in first person, second person, third person, there are only first person pronoun with which we use helping verb shall, right? Because we are working under, we are doing something and we are discussing about future perfect, so we will use will have and shall have, and afterward we will use the third form of the verb then there. Okay, use of shall with only the first person pronoun, and use of will, noun singular, noun plural, and with every pronoun, right? Affirmative sentence. Affirmative sentence, first of all we will discuss that how we can frame a sentence in this part. Subject, shall have, will have, third form of the verb, and object, right? I shall have done my job. I shall have done कि मैं अपना काम कर चुका होगा. Right? So we make plan of doing something in future. In a certain point of time we will do that. And at the same time अभी हमें ये लगता है कि एक certain point of time पे वो खत्म भी हो जाएगा. See यानी तब तक मैं अपना क्या कर चुका? I shall have done, मैं अपना काम कर चुका होगा. We shall have taken part in the games, गेम में हम पार्ट या हिस्सा ले चुके होंगे. And he will have completed his homework, अपना काम कर चुका होगा, होमवर्क कर चुका होगा. And she will have cooked, खाना बना चुकी होगी. Okay, horse will have run away from the stable. मतलब घोड़े के बारे में भी आप सोच रहे हो कि घोड़ा अपने अस्तबल से भाग चुका होगा. Right? And the next one is here. This is a negative one when we say some negative statement. shall ये सब्जेक्ट है, जो will और shall है, इसका सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यूज होगा ना. आफ्टर दैट वी विल राइट नॉट, नॉट के बाद अपना हैव, जो will और will have और shall have यहाँ पे पहले यूज करते थे अफर्मेटिव में, अब वो नेगेटिव में नॉट के बाद चला जाएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सी आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क टिल देन, तब तक मैं अपना काम नहीं कर चुका होगा. ओके, डन माई अपना काम, मेरा काम. And they will not have taught their lesson. अपना लेसन जो है ना, अब टीचर है या जो कोई भी है वो अपना लेसन कंप्लीट नहीं कर चुके हो, या टॉट नहीं है एक्चुअली, पढ़ा नहीं चुके होगे. ओके, he will not have conducted the rehearsal. वो रिहर्सल नहीं करा चुका होगा ना, कंप्लीट नहीं की होगी या फिर कंडक्ट ही नहीं करी हुई होगी. And she will not have reached at her destination. कि वो अपने डेस्टिनेशन पर, अपने जहाँ पे वो जाना चाहती थी वहां नहीं पहुंची होगी. राइट? कि भी हिंदी के जिस वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होगे आता है, and that kind of sentences we consider in the future perfect tense. And whenever we have that kind of sentence that we have will have and shall have, and third form of the verb, these are the two things to identify that in which sentence and in which tense we are.
right? See in the next slide here. Interrogative sentence. Interrogative sentence, how can you write? We have a formula, and when there is a formula in front of you, so what is difficult to understand? Shall I have played the match? क्या मैं मैच खेल चुका होगा? Shall we have covered that distance? क्या हम वो distance covered कर चुके होंगे? Shall I have painted the ball? Wall को paint कर चुका होगा? Will he have published his article till then? कि तब तक उस अपने article को published छपवा चुका होगा? Will she have written her thesis? क्या वो अपने thesis लिख चुकी होगी? Will they have saved the passenger? जो passengers है क्या वो उनको सुरक्षित बचा चुका होगा? Now move to the next one here. Interrogative negative sentence. Helping verb, use of shall and will. Then you will write subject, and after subject there is a not, then have. Third form of the verb and object, and end of the sentence you will mark here question mark, the same as is here in the interrogative sentence. Okay, shall I not have done my work? क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका होगा? Shall we not have reached at धर्मशाला? क्या हम धर्मशाला नहीं पहुंच चुके होंगे? Although we can mention some time that when we will reach there, but this is just to understand that how we can frame the statement, right? Will you not have hidden the horse in your house? क्या आपने horse को या घोड़े को अपने घर में नहीं छुपाया होगा? And will she not have learnt her lesson? क्या वो अपना lesson नहीं learn कर चुकी होगी, याद कर चुकी होगी? Will he not have completed the course? क्या वो course को समाप्त या complete नहीं कर चुका होगा? These were some statements and these were some expressions that we made with the help of these formulas, and to expressing the future time in that we get the impressions that the task will complete in a certain point of time in the future. So there is something more that I will let you know in the next slide. Expressing action seems to be completed in the future perfect. It means future perfect means in a certain point of time it will be completed. You complete हो चुका होगा, right? I shall have passed my graduation by next year, and this is the kind of anything we हम कहीं ना कहीं एक तरह की धारणा बना रहे होते हैं कि उस समय तक ये हो जाएगा. The same here कि तब तक क्या होगा, next year तक मेरी graduation हो चुकी होगी. Okay, and he will have completed his work by tomorrow. भाई tomorrow तक उसका काम हो चुका होगा. And the mechanic will have repair the TV by 7 o'clock. भी 7 o'clock तो ये 7 p.m. जो शाम का है तब तक वो मैकेनिक क्या कर चुका होगा, टीवी रिपेयर कर चुका होगा. And by the end of this year I shall have saved by, and saved actually not by, saved 1 lakh, लगभग 1 लाख रुपए बचा चुका होगा. कब? End of the year तक. So there is one more thing that is very important, so you should not miss all these things. An action completed after the completion of the second action. See, there may be the two type of actions, and एक action पहले होता है एक दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए completed after the second completion of the second. मेरे पहले इसका मतलब ये जो second वाला दिख रहा है कि भी पहला दूसरा एक्शन खत्म होने के बाद ही पहला पूर्ण माना जाता है. So the action completed first, right in future perfect. मतलब future perfect का मतलब है you will use the will have and shall have with them, and the rest तो जो दूसरे वाली रहेगी, दूसरा एक्शन जो रहेगा उसको किस में लिखोगे आप? Present indefinite tense में. See here how. Okay, the student will have left the class, क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ है, क्लास छोड़ चुके थे. कब? Before the teacher comes, टीचर के आने से पहले छोड़ चुके थे, ये छोड़ चुके होंगे, राइट? ओके, तो प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड, प्रिंसिपल स्टार्ट कर चुका होगा. बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से पहले. ओके, द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड, ये भी स्टार्ट हो चुका होगा. कब? बिफोर वी रीच देयर, हमारे वहां पहुंचने से पहले. So the second one you can see here, we are writing in the present indefinite, and the action the completed first
have been writing in the future perfect. Okay, the Gitanjali will have gone to marriage when I call her. क्योंकि जब मैंने उसको कॉल किया तो गीतांजलि तो पहले ही मैरिज को जा चुकी थी. Okay, and there is one more expression that I will let you know in the next slide. It's very important. This is the last one here in future perfect tense. An action expressing that we have a knowledge and idea of the action before. Means कि हमें ये इसमें माना जाता है, this is the kind of expression in which we assume that we have already knew something about, जिसके बारे में शायद हमें पहले से ही पता है. इस तरह की स्टेटमेंट इसमें एक्सप्रेस की जाती है. हाउ यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा के बारे में. यू विल हैव, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये तो सेम रहने वाला है, थर्ड फॉर्म भी हमारी रहने वाली है, ठीक है, लेकिन बट इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट अबाउट विच यू नो ऑलरेडी, जिसके बारे में पहले भी जानते हो. राइट, सी आपको ये लगता है कि यू विल हैव हर्ड, आपने मदर टेरेसा के बारे में तो सुना होगा. ओके, एंड यू विल हैव हर्ड अबाउट आवर प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपने हमारे इन्वेस्टमेंट के प्लान के बारे में तो आपको जानकारी होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं. एंड ही विल हैव read the newspaper so far, अब तक तो न्यूज़पेपर को पढ़ चुके होंगे. So they will have heard about the accident by this time. अब तक क्या होगा? By this time means अब तक, इस समय तक. They will have heard about the accident. Accident के बारे में उनको जानकारी मिल गई होगी, पता चल गया होगा. Right? This was something about future perfect tense. I hope you have enjoyed. You will get best out of it because there are many things to know. You should stick to the rule and then you should know about that, how and what time and in which place and how this can be used. So stay in touch for the forthcoming videos. Thank you and have a great time ahead.